Hello everyone and welcome back to my channel. So a big thank you to all of you who have made it till here. So guys, I have completed my 100 subscribers within a month and I am very happy for it. ये आप लोगों के बिना possible नहीं हो पाता था. I know it will be a small thing for some people out there. I really enjoy celebrating my small things. So I have planned a small giveaway for you all out there, so that you all can also join me in this small celebration of mine. So do participate in it. I will be selecting two people out there. So the giveaway rules will be announced in the end of the video. So do watch it till the end. So today I am also sharing what's in my backpack essentials, or what all I carry in my backpack. So without any further ado, let's get into the video. So here it is, my small backpack, and it's in a pink color. So let's get into it. So I have just shifted my camera so that my bag will be visible to you all. So it have basically two compartments, this one and this one, and two side chains here and here. So let's start with the second compartment first. Let's open it. I have my water bottle here, very essential to hydrate yourself. A notebook, although you have to go to college, notebook is essential. A small cute little wallet. इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ पैसे हैं, some IDs, my college ID cards and all of that stuff. So my glasses. I am a chashmish. The next thing I have is my lab coat, very essential. I have to carry it with me every day. I am a pharmacy student and lab coat बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. हम लोगों को अंदर परमिशन नहीं है लैब में प्रैक्टिकल देने की, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की विदाउट अ लैब कोट. सो इट्स वेरी एसेंशियल फॉर मी. सो द लास्ट थिंग इज़ दिस पाउच. इसके अंदर सारी वो नेसेसरी चीज़ें हैं जो भी मुझे कॉलेज में रोज़ लगती है. तो देखते क्या क्या है. So the first thing is an extra mask. I always carry one extra mask with me in college. वैसे अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं है, जब भी मैं जाऊंगी तो एक एक्स्ट्रा मास्क ज़रूर से रखूंगी. Some bobby pins and some scrunchies in case I need it. So the next thing I have is my miniature perfume. I always carry it with me. Some of my favorite deodorants, or sometimes a roll-on, sometimes body mist. Very necessary. Some chocolates in case I am hungry. Some medicines, very essential in case I need it or someone else need it. Very essential. I love reapplying lip balms. So इसलिए मैं हमेशा ये रखती हूँ अपने साथ. Some mints to refresh my mouth. Some coins. ये पता नहीं कहाँ से है, ये नहीं रखती हूँ मैं, उसका एक अलग से पाउच है. Yeah, that's it. इसमें इतना ही था. So guys, सेकेंड वाले कंपार्टमेंट में इतना ही था. So let's get into the first compartment. Hand sanitizer, very essential nowadays. My earphones, very essential. I love listening to music और इसके बिना मैं नहीं जाती. इसमें मेरे Realme के earphones है, very essential. So the next thing is some pens and some highlighters. Black pen, blue pens, highlighter, red pens,
and all of that. I don't keep a separate pouch of it. Usually previously I used to keep a separate pouch of pens, पर वो चोरी हो गया, तो तब से मैं ऐसे ही बैग में डाल देती हूँ. बट आई विल श्योरली कीप अ सेपरेट पाउच ऑफ माई पेन्स. बट कॉलेज तो स्टार्ट होने दो. एंड सम स्टिकी नोट्स, इट्स वेरी एसेंशियल फॉर मी. बहुत अच्छे कलर्स है इसके स्टिकी नोट्स के, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं. अगर इसको मैं अपने नोट्स के साथ में अटैच करती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ाई करने के लिए. तो आई ऑलवेज टेक दिस. सो या गाइस, इसमें इतना ही था. एंड आई डोंट कीप एनीथिंग इन दिस साइड पाउच. इसमें कुछ भी नहीं है साइड पाउच में. दोनों साइड पाउच में कुछ भी नहीं है. पूरा मेरा बैग एम्प्टी हो चुका है. सो या गाइस, इतना ही था मेरे बैकपैक में. और आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एसेंशियल. और आप लोग भी बताओ आप लोगों के बैकपैक में क्या है जो मेरे बैकपैक पे नहीं है, ताकि मैं भी इंक्लूड कर सकूँ अपनी बैकपैक में वो सारी चीज़ें. और आप लोग भी इसमें से चीज़ें अपने बैकपैक में इंक्लूड करो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो. सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ गिव अवे. सो द फर्स्ट रूल इज़ you have to be a subscriber of my channel. So the second rule is share my channel's link to 3 of your friends and tell them to subscribe. So the third and the most important rule is you have to do it within first 24 hours. After that your comments will not be counted. And if you have completed all the 3 steps, so please comment me down in the comment section as done. So 2 of you will be selected for the giveaway. If you want to win, please follow all the steps properly and do participate in this giveaway. So yeah, that's it for today's video. Hope you all enjoyed watching this video, and please like this video, comment me below, and please do participate in this giveaway. Till then, stay safe, stay happy, stay home, stay positive, and please stay away from corona. See you soon.